Hello everyone, welcome to Ansarkari. This video is the continuation of the permutation and combination series and we'll be starting with the various types of questions of combinations. So question number 7. In an examination, the question paper consists of total 12 questions divided into two parts, 1 and 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. यानी कि क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट्स है 1 and 2 जिनमें 5 और 7 क्वेश्चन है रिस्पेक्टिवली. अब स्टूडेंट को ऑप्शंस मिलते हैं कि 8 क्वेश्चंस तुमको करने ही करने हैं, बट उनमें से तुम्हें कम से कम 3 क्वेश्चंस करने हैं हर पार्ट में से. ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 6 क्वेश्चंस कर लो पार्ट ए में से एंड 2 कर लो पार्ट बी में से. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज पार्ट बी में से भी मिनिमम यू हैव टू डू 3, उससे ज़्यादा कितने भी करो. And in part A also you need to do at least 3 questions. And total 80 करने हैं, उससे ज़्यादा exceed नहीं करना. In how many ways can a student select the questions? Now this is the question. Now obviously this 7th question is about combination and not arrangement because they haven't said that in what order we are solving the questions. No, it is just said that you need to attempt questions and select. Select is the keyword for like all the combination questions. Now here what we'll write is part 1 and part 2 of the question paper. So part 1 consists of 5 questions and part 2 consists of 7 questions. Total questions that we need to solve is equal to 8. These are a few things that we need to keep in our mind, and minimum from each part should be 3 questions. So with this information we will start writing. Now the first case can be that we'll start with the part A, part first of the question paper. We'll have how many options? We'll have 5 options out of the first part, and out of these we need to do at least 3. So we'll write here 3, any 3 the ways of, so the combination will be 5C3, selecting any 3 questions out of these 5 questions in the first part. Then for the second part what happens is we'll write 7 here, we'll have to write 5 here. The reason being we need to solve in total of 8 questions, right? So 3 plus 5 हो जाएगा 8. 3 plus 5 क्या बात हो रही है? It will be equal to 8. That is the reason why we have written 5 here. Now these are the total options available कि कितनों में से choose करना. And why are we using the multiplication sign here? The reason being कि हमें दोनों part में से करनी है. ये option नहीं है that either you do from the first part any number of questions and then you do, or you do from the second part. It is and कि दोनों parts में से करने हैं and the conditions are given here. The second case can be that इन 5 questions में से अब हम 4 करेंगे. मिनिमम तो हमें 3 करनी ही करना है, तो हम इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लेकर चलेंगे. हम इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर अटेम्प्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. Then we'll multiply this by, again we'll have 7 options for the, ये cases है कि या तो हम ये कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है. So 4 plus 4 will be equal to 8 again, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा है, 7 में से 4 करने हैं. The third case can be 5C, again we'll increase कि हम यही वाले 5 क्वेश्चन कर रहे हैं और जो सेकेंड पार्ट है मल्टीप्लाई का साइन इसलिए बिकॉज दोनों पार्ट्स में से कर रहे हैं. I again repeat. Then out of the 7 options available, we write C3. 3 हमें क्यों लिखना है? Because हमें 5 plus x, इसको अगर हम x माने, it should be equal to 8. That is the reason why we write 3 here. Now again, this is after adding, right? 4 plus 4, 8, 5 plus 3, 8. Then the fourth option could have been of like from the second part if we solve like 6 questions, and from the first part which has like total of 5 questions we solve only 2 questions. तब भी तो 2 plus 6 फिर 8 होता, हम in total 8 questions solve करते, तब ये वाली condition satisfy हो जाती, but ये वाली नहीं होती, which is that minimum 3 questions are to be taken from each part. So the numbers should not go below 3. It can be equal to 3 or can be greater, but of course not greater than the number of choices or the total questions available to us within each part. So now what we'll do is we'll add these cases like the first case. So fourth case is not possible.
So these are the only three cases that are possible. Now adding the first case, second case and the third case. Now why are we adding these? अब हमने मल्टीप्लिकेशन का रीजन तो जान लिया. दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि दोनों चीजें हो रही हैं साइमल्टेनियसली और होनी चाहिए. दैट इज द रीजन वाई वी मल्टीप्लाई, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन मीन्स एंड. तो जाहिर सी बात है दोनों पार्ट्स में से करेंगे क्वेश्चंस. नाउ why are we adding all these three cases? Because ऐसा नहीं है ना कि कोई बच्चा जो है वो अपने एग्जाम में फर्स्ट पार्ट में से 3 क्वेश्चन कर दे, सेकंड में से 5 कर दे, और यानी कि और दूसरी चीज वो ये भी कर दे साथ की साथ कि 4 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में से, सेकंड पार्ट में से बाकी की जो 4 क्वेश्चंस है. दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल. इनमें से कोई एक ही ऑप्शन हो सकता है, या तो कोई बच्चा ऐसे करे, या कोई बच्चा इस तरीके से करे, या फिर ये. तो ये जो या है, दिस मीन्स और, एंड और मीन्स एडिशन. दैट इज द रीजन व्हाई वी ऐड ऑल दीज थ्री केसेस. सो द फर्स्ट केस हो जाएगा 210. इसका अगर हम सॉल्व करेंगे 5c3 into 7c5, we'll get 210. In the second case, we'll get 175 after solving, and in the third case, we'll get 35. So after adding these three, the final answer that we'll get is 420. So there will be total number of 420 ways in which we can select the questions from the question paper following these conditions. कि total 8 questions होने चाहिए, choices available हमें given है, and minimum 3 questions होने चाहिए हर part में से. Starting with the 8th question now. There are 18 points in a plane, no 3 of which are in the same straight line except 5 which are collinear. Find the number of straight lines, and second is triangles formed by joining them. So first we'll focus on the first case. अब इसमें बोला है कि हमारे पास 18 points है plane पे. So for now, जिनमें से कि जो 5 है वो collinear है. Collinear means which lie on the same line. So out of these we'll draw 5 points here which are collinear, which lie on the same line, या फिर जिनके थ्रू हम एक लाइन पास कर सकते हैं. So 18 points, which means that these random points that we have, no 3 of which. Now why no 3 of which? Because किन्हीं भी 2 points में से obviously हम कैसे भी एक line pass कर सकते हैं. There is no order. And second इस केस में combination लगेगा. The reason being, चाहे हम यहाँ से start करें उस line को pass करना है, यहाँ से start करें, it won't matter because it is a line. And हमें बस दो उनको include करना है, selection है बस points का. That is why we use combination here, not permutation, because यहाँ order matter नहीं करता कि तुम कहाँ से start कर रहे हो बनाने का. It doesn't matter at all because line की बात हो रही है, right? And then there are 2 points जिनसे हमें बनानी है obviously, and 18 points which are total given to us. So finding the number of straight lines. Now 5 हमने पता लगा लिया collinear. What we'll do is total, if we see the cases, there will be 18c2. यानी कि टोटल इन 18 पॉइंट्स में से, जिनमें से कि जो 13 पॉइंट्स है वो काइंड रैंडम है, और जिनमें से 3 में से कोई भी स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो रही, उनके बारे में अगर हम बात करें 18c2 में, टोटल केसेस जो बनेंगे हमारे पास, उससे वो जो आंसर है वो इस चीज़ से आ जाएगा. सेकेंड पॉइंट हमें क्या करना है, हमें इन जो 5 पॉइंट्स में से जो लाइन्स बन रही हैं उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन टोटल लाइन्स में से. The reason being, because चाहे हम लाइन को ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, it won't matter, it will be the same line because line never ends, right? तो इस वजह से we subtract these cases, these number of lines which are formed by these 5 points. अब number of lines कैसे पता लगेगा? 5 पॉइंट में से दो दो हमें एक टाइम पे यूज करना है, इसलिए हमें फॉर्मूला लगा रहे हैं जो कि हमने सेम चीज यहाँ करी थी. So we'll solve this. So 18c2 को सॉल्व करते हैं एक बारी. To 16 factorial v9, तो ये हो जाएगा 153. तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो बनेगी इन टोटल पॉइंट्स है वो बनेगी 153. बट हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5c2 से जो भी लाइंस बन रही है उन सबको, इन 5 पॉइंट्स से जो भी लाइन बन रही है, बिकॉज इनसे एक ही लाइन पास होगी, नो अदर लाइन विल पास. उसको हम बाद में ऐड कर देंगे. सो फर्स्ट विल सब्ट्रैक्ट ऑल दी cases. So 5c2 is 10. So we'll subtract 10 from 153, which will be 143. Plus we'll add this one line जो इन सबसे बन रही है. And so the answer will be 144.
तो ये तो हो गई फर्स्ट केस की बात। फिर जब हम सेकंड केस पे आते हैं, ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देम, दिस इज मच सिंपलर बिकॉज इन केस ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं 18, और हमें एक ट्रायंगल बनाने के लिए, जैसे हमें एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत थी, अब हमें एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स की जरूरत है, राइट? The 3 vertices that we have, that is the reason why we are writing here 3, and now the total number of cases will be 18C3, but again we need to subtract those triangles जो हम assume कर रहे हैं कि बनते हैं इन पास लाइन से, because obviously ये जो points है ये collinear है, these 5 points, okay not this one, these 5 points that we have they are collinear and इनसे triangle नहीं बन सकता because if you join 3 of them line ही बनेगी, you need non-collinear points to form a triangle and ये points collinear है, so again we will subtract this, so 18C3 into 16 into 15 factorial divided by 15 factorial into 3 factorial. So if we cancel, then 3, so 6 we have 3s, and then we'll multiply and get the answer. Then for 5C3 if we solve, 4 into 3 factorial into 2 factorial, it will be again, this will be equal to 10. 7 and 17 into 3 into 16 giving us 816. So we'll subtract 10 from 816, which will give us 806 triangles. So we'll have 806 triangles that can be formed from these 18 many points, out of which 5 points are collinear or they lie on the same line, or a line can be passed through all these 5 points. Thank you.